welcome to a couple of ride guys. And today we are going to discuss the tires which are installed on my bike, the Michelin Pilot Street 2. They've done about 8,000 kilometers and मुझे लगता है आप लोगों को जानना चाहिए कि ये कैसे behave किए और कैसे चले. Although they're still working, but you guys should know what happened. आगे चलने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ मोटिवेशन बढ़ा के रखिए, देखते रहिए और मुझे ऑल्सो बताते रहिए कि किस तरह का कंटेंट आप लोगों को पसंद है, किस तरह की चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं. बहुत अच्छा लगता है. आई वुड बी एबल टू क्रिएट सम मोर कंटेंट ऑन द रिक्वेस्ट्स एज यू गाइज प्लीज़. तो आगे चलते हैं. मिचेलिन पायलट स्ट्रीट 2. So as you can see, I have taken them from all sort of paces, from off-road to road to speeding to wet roads to cold winter weathers. And more or less, they have done their thing properly. And I will tell you in pointers, in bifurcated pointers as to how they performed in each and every condition and how I managed to procure them and why I kept it going so far so long. So सबसे पहले शुरू करते हैं tires and its ratings, which are very important. So this is a P-rated tire. It's not an H-rated tire, which is recommended in a bike like this. So Interceptor में H-rated tire ही आता है pre-installed. तो मैंने P-rated tire क्यों लिया? See, before that you need to understand that I was doing that conversion into 17 inches and मेरे को P-rated tire लेने का ऐसा कोई reason नहीं था, but I wanted to keep my conversion into a certain cost. तो ये टायर्स मुझे 5300 रुपीज़ का पेयर मिल गया करोल बाग से, which was very generous for a tire like this and I wanted to test it out and change it later. तो मैंने उसकी वजह से ये टायर सोचा पहले मैं चेंज करूँ, पहले मैं यूज़ करूँगा और फिर मैं टेस्ट करके बाद में अच्छे टायर पे अपग्रेड कर लूँगा. तो पी रेटेड टायर का ये स्पेशली मिचेलिन पायलट स्ट्रीट 2 का रेटिंग क्या है? सी, पी रेटेड टायर का स्पीड रेटिंग होता है 150 किलोमीटर्स एन आवर ऑन अ लोड रेटिंग ऑफ 66. 66 क्या डिनोट करता है? 66 इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 300 kilograms per tire. Now if we install two of these tires, approximately 300-600 किलोग्राम का लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है एट 150 किलोमीटर्स. उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये टायर्स ऑन 150 किलोमीटर्स विद अ स्लाइटली लेस लोड रेटिंग विल डू मोर किलोमीटर्स इन आवर, बिकॉज लोड रेटिंग कम होता है तो स्पीड भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मार्जिनली. बट रेस्ट एश्योर्ड मैंने इसको 150 के ऊपर भी टेस्ट किया है एंड स्टेज पुट. दिस I have recommended to couple of my friends as well and they have also installed it and they're very satisfied with this tire. It's not overtly aggressive and it's not overtly touring oriented. तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का जो ये अप्लाई करके रखता है. तो so the next question that I heard from a lot of people is how did it perform in wet conditions? So in wet conditions it performed really well. So if you guys focus, these are hydroplaning grooves and I will show you a close up and you guys will be able to make it. ये hydroplaning grooves है. hydroplaning क्या होते हैं? पानी में जब ये टायर जाता है तो पानी में ये टायर जो पानी है बाहर निकालता है. That gives us a lot of good grip in the wet. And I have run it in very wet conditions, trench conditions and winter wet conditions and it performed really well. It gave me nice and more grip. So much so that it was performing better than a lot of road biased tires. Although this is also a road biased tires, but इसके जो hydroplaning grooves हैं वो मिचेलिन ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं and that helps in wading water a lot. तो काफ़ी ग्रिप बना के चलता है ये in the wet. दूसरा क्वेश्चन था how did these tires perform in the winters? Winters is a tricky thing for this tire. Why? So this tire is made
of slightly harder compound, and it is also made for bikes of a say 200 to 300, 150 to 300 cc's. So what happens is that this tire takes a lot of time to heat up, और उससे होता क्या कि इनिशियली 6 किलोमीटर तक, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर तक ये टायर ऐसा लगता है जैसे आप प्लास्टिक चला रहे हो. देयर इज एब्सोल्युटली नो ग्रिप इन इनिशियली till the time it heats up, and it see, there is always a trade off when you buy hard compound tires. See, hard compound tires will last longer but will take more time to heat up. So a very similar thing happens with a very famous tire by Bridgestone called the Battle Axe that comes pre-installed in a Ninja 1000. Now obviously इससे कोई comparison नहीं है, but उस टायर का भी trait similar है. It takes more time to heat up. A lot of people complain about Battle Axe not giving you optimum grip, but as far as I believe, Battle Axe is a very very nice tire for Ninja 1000. But that is for a later thing. Coming back to winter performance on this bike. So in very cold winters, which in north we see about 5 degrees and 1 degree, at that time it takes more time to heat, say about 6 kilometers, and rest everything then becomes nice and easy. So the third point was, how long does it last? So I had changed these tires to experiment with the 17 inches set at about 8,000 kilometers, and I have done about 16,000 kilometers now, and मेरे हिसाब से they have done about 60% of their life. They will do another 5,000 kilometers depending on how I ride, और मैं इसको कितना टॉर्चर करता हूँ. बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन ब्रेकिंग करूँगा तो जल्दी घिसेंगे, और बहुत आराम से चलाऊँगा तो ज़्यादा चलेंगे. ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग टायर. Usually H-rated tires last say about in decent conditions say about 8 to 10,000 kilometers, और वो भी बहुत अच्छा माना जाता है. But this tire has survived 8,000 kilometers and tread is still left, and it's not marginally left, it's quite a lot. So 4,000 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है कि ये बाइक चली जाएगी अभी और with the same tire setup. So that way मुझे लगता है कि अच्छा खासा माइलेज दिया है इस टायर ने for a cost which is not much. So cost of about 5,300 rupees. These tires are phenomenal. So cheap, best और माइलेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिला इससे, और परफॉर्मेंस जो मिचलिन ने इसमें डिवाइस करी है वो काफ़ी मुश्किल होती है काफ़ी टायर्स से एक्सपेक्ट करना. सो फ्रॉम वेट to dry to off-road to on-road, I have taken it all. I have also taken it slightly off-road where they were tricky to handle, but not that मैं गिर जाऊंगा वाला कॉन्फिडेंस अनकॉन्फिडेंट होता था. तो बहुत तो एक इंटरमीडिएट टायर जिसे कहते हैं ना, जो सब कर लेता है, ऑलराउंडर टाइप, उस तरह का टायर अपील है इसका in all the ways, like from performance to grip to the speed rating to cost. So अब आ जाते हैं इसके verdict पे. So like I already said, I was experimenting with the tire and I also wanted to understand how my bike behaves on a 17 inches, जो मेरे लिए बहुत एक नई टेरिटरी थी जब मैंने इंटरसेप्टर के 18 इंचेस से 17 इंचेस पे चेंज किया. मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता था बिकॉज अगेन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. तो मैंने एक ये मीडियोकर टायर ऑप्ट किया जो एच रेटेड नहीं था, पी रेटेड था. आई डिड एवरीथिंग फ्रॉम इट. आई एक्सपेक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम इट. आई कुड लीन ऑन इट, आई कुड गो फास्ट ऑन इट, एंड आई कुड ट्रिप ऑन इट. एंड all these small things that it added up into made it a very versatile tire. And now my expectation from a new tire are even more, because I want that much more to do from that one tire. See, I am not a rich person. I want एक टायर जो काफ़ी कुछ कर ले और मेरे को घर ले आए, right? rather than कि एक ट्रैक ओरिएंटेड टायर है और एक ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर है और हर बार मैं उस टायर को चेंज करता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई यूसेज. सी,
I am very very happy with a tire which can do it all, and it serves my purpose. It serves the purpose of this bike. And in the end, I will only say that it is a cheap and a durable and a performance oriented tire that Michelin has devised very 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 carefully. क्योंकि ये R15 में भी डल रहा है और डोमिनार में भी डल रहा है और KTM 250s में भी जा रहा है, कई लोग डालते हैं. तो मुझे लगता है कि मिचेलिन ने इतना सब सोच के इस टायर को क्रिएट किया, और मुझे लगता है दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. एंड ऑन दिस ड्यूरेबल, best possible combination cheap sort of a note, this is a couple of guys signing off. Bye.